हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉग बाबा। और बिल्डअप है सुपर संडे का। जैसा दोस्तों आप जानते हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस हैं संडे को। लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड, एल क्लासिको, इंडिया पाकिस्तान, एंड करवा चौथ भी है संडे को। तो हमने सोचा कि बिल्डअप को चालू किया जाए विद द प्रीव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। एंड who better to do this with our most special guest? So we have today with us Nitika Garg from Indie Cop एंड प्रियान गुप्ता फ्रॉम यूनाइटेड स्टार। तो जैसा नाम से आप लोग पहचान सकते हैं, नितिका इज अ लिवरपूल फैन, प्रियान इज अ यूनाइटेड फैन। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द वीडियो टाइटल। तो प्लीज दोस्तों जाएं, चेक करें, दोनों का कंटेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। पहले प्रियान से तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रियान, अभी जैसा हम देख रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। गॉट ओनली 1 पॉइंट फ्रॉम अवेलेबल 9 इन लास्ट 3 प्रीमियर लीग गेम्स। फिर चैंपियंस लीग में भी लास्ट जो गेम था विलारियल के अगेंस्ट, इट वाज नॉट वेरी एनकरेजिंग। इट टुक अ ब्रिलियंट विनर फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन द लास्ट मिनट टू सेटल द टाई। तो एज ऑफ नाउ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी अटलांटा वाला गेम होना बाकी है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब अभी मूड कैसा है एज अ जनरल यूनाइटेड फैन? हाउ आर यू फीलिंग? Mood तो great नहीं है. It's not great. The team hasn't been performing well, and add to that the other teams around the Premier League, Chelsea, the Liverpool, the Cities, they've been doing so well. So it's not a great mood. And also given the fact that we've had such a great window, we've gotten Rafa Varane, who's one of the best centre backs in the world. We've gotten Cristiano Ronaldo, we've gotten Jadon Sancho, one of the most promising wingers in the world currently. So मतलब सीजन स्टार्ट होने से पहले एक्सपेक्टेशंस थी थोड़ी, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा रियलिस्टिक भी थे हम कि ऑब्वियसली सडनली सीजन नहीं जीत, you're not going to win it. There has to be a little time it's going to take for the players to get used to each other and all. But ये start definitely नहीं expect करी थी. We expected the team to perform much better. But हाँ मतलब I think it's going to take some more time for the players to get to play with each other. Rashford is just coming back from injury, so that's a little positive that we are holding on to, the little positive that we have. Otherwise, I mean, it's not great. The mood is not great. एंड आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी, नितिका के पास अब हम आएंगे सेम क्वेश्चन के साथ। तो लिवरपूल की जहां तक हम बात करें तो बेहतरीन शुरुआत, एकदम तोड़ मरोड़ फोड़ फुटबॉल खेल रही है लिवरपूल। वॉटफोर्ड को 5-0 हराया, एटलेटिको मैड्रिड को बिल्कुल कन्विंसिंगली 3-2 हराया, और काफी इंटरेस्टिंग गेम था। तो नितिका, हाउ डू यू फील राइट नाउ अबाउट लिवरपूल्स चांसेस इन द प्रीमियर लीग, स्पेसिफिकली राइट नाउ? It's like I'm quite happy with the way we have started this season, and I'm sure कि अभी आगे तक जितनी देर तक हम continue कर सकते हैं, I'll be happy about it. But then I know one thing that अभी लीग पोजीशन में जो चल रहा है, जैसे तुम परफॉर्म कर रहे हो, चाहे तुम टॉप ऑफ द टेबल पे रहो पूरे एवरी वीक ऑफ प्रीमियर लीग, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज हमारा असली जो स्ट्रगल है वो शुरू होता है जनवरी में. बिल्कुल, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट लूजिंग मैचेस. चाहे कोई भी टीम हो, डज नॉट मैटर, ईदर वी आर फेसिंग मैन सिटी और ब्राइटन और न्यूकासल यूनाइटेड, दैट इज व्हेन आवर स्ट्रगलिंग फेज बिगिंस. एंड द काइंड ऑफ टीम दैट वी हैव राइट नाउ, ये अभी जो प्लेयर्स हैं उसी से चल रहा है. एक और इंजरी हो गया, आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद इट. बाकी यू नो एफकॉन होने वाला है जनवरी में, so that is when we won't have Mo Salah, Sadio Mane, so that is when it's not like that अगर दो ही मैचेस हैं उस टाइम पे so we can just go ahead, कोई बात नहीं अगर वो दोनों मैचेस में we don't perform well, because it doesn't work like that. So we need to like perform in every single match, and that's what Klopp's philosophy is. He does not really think about till the end of the Premier League what is going to happen, but it's always about the next match, and we have to perform in that next match. And I think we have been doing that till now. After that Harvey Elliott injury, I got really scared that that was the key for this season for Klopp, because we did not sign any player. But then that we got that injury so early, and right now I'm quite happy with the team. But I won't say that I'm pretty confident that we are going to win the title or anything, or we're going to be on the top of the table when the season ends. So it's all good right now, and I'm happy right now. So let's see कब तक कंटिन्यू रहता है ये. हाँ मतलब काफी कुछ डिपेंड करता है एफकॉन में जो एब्सेंस हो जाएगी, जैसा आपने बहुत सही कहा कि साला और सारी टीम्स के पास चेल्सी और सिटी जैसी दो स्क्वाड्स भी नहीं होती ना. यार आप यूनाइटेड के पास भी है यार, फॉरवर्ड्स में तो काफी डेप्थ है. टॉकिंग अबाउट डेप्थ एंड स्क्वाड, तो डू यू थिंक कि ओले इज स्टिल टू फिगर आउट हिज बेस्ट 11? और
जैसा मैंने शुरू में बोला कि अटलांटा वाला गेम अभी होना बाकी है, अभी वी आर रिकॉर्डिंग अराउंड 9:30 अभी जो टाइम हो रहा है, तो इट्स स्टिल 3 आवर्स टू द गेम। तो क्या आपको लगता है कि ओले इज द राइट मैन, एंड डू यू थिंक कि ओले विल स्टे इन द जॉब फॉर लॉन्ग? मतलब आपका क्या स्टांस है ऑन दिस होल ओले आउट नैरेटिव जो अभी बन गया अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड? मैंने जो पहले भी बोला था, आई थिंक दिस ओले आउट नैरेटिव इज थोड़ा अभी प्रेमेच्योर, because I mean the season has 8 games and 9 games and it's still too early to say. And like Nitika also very rightly said, the position in the league right now is not going to be your position at the end. It's your coming December, Jan, where your positions start to solidify a little. So it is still too early. Like you asked me if Oli knows his best 11. I don't think he does. I don't think I know my best 11. And I don't think Oli is known his best 11 for the last 3 years. He's not known. I don't think Matic, McTominay and Fred could ever be in the best 11. It's just, I mean, you can't have a midfield two with them and call that your best 11. So clearly he doesn't know. I think Pogba should play in the midfield, but then you see performances like Leicester where he's just all over the park. He's not involved. मतलब वो जो टेनासिटी होती है वो नहीं है उसमें, वो लैक करता है. सो इट्स अगेन वेरी डिफिकल्ट. बेस्ट 11, I don't Do think you Oli think knows for sure. Ronaldo has created more problems in terms of tactics on the field than he has solved? मतलब थोड़ा सा रोनाल्डो के आने के बाद से ब्रूनो का जो गेम ना बहुत बंदा सा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड सा हो गया है. वी आर नॉट सीइंग दैट फ्री मूवमेंट, थोड़ा डीप ड्रॉप कर रहा है बॉल लेने के लिए, मतलब ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द मार्कर्स, और जो एक वो फ्रीडम से खेल रहा था वो इवन वो लीड्स वाले मैच में भी देखा था जब उसने हैट्रिक मारी थी. तो डू यू थिंक कि दिस इज द केस कि अब आपको बनानी ही पड़ेगी रोनाल्डो के अराउंड टीम? क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि ओले इज एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ रोनाल्डो राइट नाउ. Definitely, and like you said, the Leeds game, the games before Ronaldo came in, we were playing pretty well. काफी free flowing football था. But on the other hand, you've gotten a player who is probably the greatest of all time. Not many people will deny that. And the fact that you have him, you have to make the team around him. You can't deny that. You have to. And I don't know if Oli is deluded about it or he's still trying to, play some other formation around him, but he has to. We need to put in crosses. We need to play a little more direct football with Ronaldo in the team. ये जो narrative है कि रोनाल्डो आने से जो more disadvantages हो गए, I feel ये थोड़ा. He's played at so many teams and he's been fantastic. So why is it that only United में आके he's being a problem for the team? It can't be. It's clearly not him. And United haven't done well for the last 7, 8, 9 years. So it's clearly not Ronaldo who is the problem. Of course, I mean, we knew he had some limitations considering his age and considering जो pressing की जो भी बात चल रही है सब जगह. But you have to build the team around that. You have to take that into account. You have to play to his strengths, and that is when he will deliver the goals. And I don't think we are doing that right now. नितिका, आपका क्या थॉट है इस पे होल ओले आउट सीन पे? डू यू थिंक ही डिजर्व्स मोर टाइम कि नहीं अभी मतलब हो गया, अभी नहीं हो पा रहा है इनसे? See, as a Liverpool fan, I would love it if Ole is there for quite some time, like keeping the rivalry inside here. But then if I can say that when, Jose Mourinho was there in the team, तो काफी defensively खेलने लग गए थे, and that is not the United that even I don't think United fans liked the way they were playing. So what Ole did, he brought that character, he brought that attitude back to the team. He brought that identity back, that, what, we are going to give you that entertainment football that you have been seeing under maybe Alex Ferguson, and I will deliver that to you. And I think he has not disappointed in that area. So they have been improving season by season. Obviously, now there are some problems because he has got best of the best players in the team. So I just feel that he need to utilize them better. And like you're talking about Ronaldo, I think that, yes, it has caused a little bit of problems, definitely, because when Cavani used to be there, when he used to start in the game, I used to get scared. Like, I wouldn't want to be against Cavani. मतलब Cavani रहता तो प्रेस आता था आगे से, वो प्रेस नहीं आ रहा है रोनाल्डो. Cavani वो एक एफर्ट निकालता था, बहुत ज्यादा वर्क रेट था.
एग्जैक्टली एंड अभी रोनाल्डो के आने से थोड़ा वैसा लग रहा है कि आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज नॉट द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, बट देन वही चीज है, ओले इज नॉट एबल टू मैनेज हिज मिनट्स एंड देन एन ईगो लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही वोंट बी sitting out in a match or two if he just has to think what Ole has to think कि कैसे हम form कर सकते हैं टीम को, and I think Bruno Fernandes he needs rest for a match or two. I think बहुत बहुत काम निकाला है, he has been playing almost every match for United and then Portugal के लिए भी he is playing, so you can't just keep like अगर वो इंजरी नहीं हो रहा है, इंजरी प्रोन नहीं है, तो doesn't mean कि तुम उस प्लेयर को खिलाते रहो. आई थिंक थोड़ा अगर रेस्ट करने के बाद ब्रूनो कम्स, आई थिंक ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, तो वो काफी अच्छा रहेगा. बाकी सीडीएम सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर का प्रॉब्लम तो थोड़ा है ही, बिकॉज पोग्बा थोड़ा अटैकिंग हो जाता है, एंड व्हेन इट कम्स टू होल्डिंग द बॉल इन दैट मिडफील्ड, प्रोवाइडिंग दैट डबल पिवट, कोई है ही नहीं है साथ में रखने के लिए, तो वहां भी थोड़ा प्रॉब्लम है. तो मे बी अगर वैन डी बीक को यूज करे, देयर आर सच गुड प्लेयर्स. ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने ये डिफेंसिव मिडफील्डर वाला, क्योंकि जब हम फ्रांस में देखते हैं तो पोग्बा वर्ल्ड क्लास हो जाता है एकदम से, और वेरी नाइस सीरियसली. हाँ, और यूनाइटेड आते ही मतलब वो फिर हम देखते हैं कि यार वो एफर्ट नहीं लगा रहा है, या वो उसको समझ नहीं आ रहा कि डीप ड्रॉप करे या बॉल को आगे लेके जाए, क्योंकि फ्रांस में उसका बॉल विन करने का जो काम है वो है नहीं. तो एक एंगोलो कांटे नाम के प्लेयर हैं, ये इनकी आपको दिख जाएगी पीछे, तो वो है उनके साथ. तो आई थिंक ही इज द बेस्ट. और मैंने इसमें भी यूनाइटेड लिवरपूल में भी चेल्सी घुसा दिया शेमलेसली. I agree, completely agree. And Pogba does need Pogba. I won't say he needs. He will perform much better with a Kante-like midfielder with him. But मेरा problem Pogba से ये है कि you can't. Your style of play can't be dependent on another player. You have to have your own identity, and you have to play the same football you play for any team you play with. Now, McTominay ho, Fred ho, ya Kante ho, whoever it is, you have to play your style of football. If you are playing one way for one team and another way for one team, it doesn't work out. वही है, थोड़ा सा टैक्टिकल फ्रेल्टीज तो है. तो एक मैनेजर से दूसरे मैनेजर की तरफ चलते हैं, तो नितिका लास्ट सीजन से और अभी इस सीजन में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है. ऑब्वियसली द मेन रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ वैन डाइक थी लास्ट सीजन, और हमने देखा था सादियो माने भी वाज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, बहुत इजी चांसेस मिस कर रहे थे. अब वो सारी प्रॉब्लम हैव सडनली बीन वैनिश्ड एकदम से, कुछ भी मतलब अब गलत नहीं लग रहा है लिवरपूल के साथ. वैन डाइक टॉप फॉर्म, माने स्कोरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर अगेन, मो साला इज नाउ इन माय ओपिनियन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आई डोंट नो, पीपल माइट नॉट अग्री विद मी, बट व्हाट हैज चेंज? मतलब टीम तो लगभग सेम ही है. वो थियागो को ले गए हैं बेचारे, उसको तो खेलने को ही नहीं मिलता. आपने वैन डे बीक की भी बात करी थी, मैं चाह रहा था यार बेचारे ब्रूनो को रेस्ट देके थोड़ा वैन डे बीक को भी खिलाओ. बट कमिंग बैक टू लिवरपूल, मतलब सिमिलर सेम ही टीम है और ज्यादा कुछ एरियाज में स्ट्रेंथन भी नहीं किया. अगर आप जैसे देखोगे एफकॉन में अगर साला और माने जाते हैं तो वो डेप्थ की काफी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो फ्रंट थ्री आपका शायद जोटा, मिनामिनो और ओरिगी हो जाएगा उस टाइम पे. तो व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन कि लिवरपूल अभी इतना अच्छा कर पा रही है? क्लॉप को देना चाहिए यार क्रेडिट इसका मेरे हिसाब से. Definitely. It's like Klopp is the manager. He's a people manager and he plays on emotions a lot. And we've seen that from the very first day that he came to Liverpool, from changing that doubters to believers. And then when we had that Barcelona match and then it became mentality monster. So you understand that is a kind of slogans that he gives and it connects with people. It resonates with people. And I think he plays on emotions a lot. So whenever like I am pissed off after a match, we didn't have a good game and I'll listen to his interview or something with press conference and I'm like, yeah, he's right. We are like putting a lot of pressure on the player. So the thing just changes in me. That fury and all, everything changes. So I feel that, yeah, obviously we had a lot of problems with the centre backs last season. Fabinho, our CDM, was playing as a centre back. Hendo was playing as a centre back. Talk about who did not play as a centre back. It was like really creating a lot of problems because when there is a shift in the team, एक position का हर बंदा injured है. So वो जो आगे के forward passes कर रहा है, एक link जो टीम में बनता है. कुछ गेम्स में दिखता था कि हेंडो बहुत अच्छा कर रहा है as a centre back. तो लगता था we will click and we can play, but then it doesn't work like that. That's not his natural position. एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर लिया तो माने का भी ऊपर से साथ ही में माने का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया. फर्मिनो भी it was okayish, like not बहुत अच्छा परफॉर्मेंस. It just I can say we were lucky that we got Jota at that point of time and he really like उसने काफी अच्छा करा हमारे लिए. But then this season with the same kind of team that we have, again I will say that Klopp does not like to have a large squad. He works well with smaller squad
and he does not like that कोई talented players ऐसे ही bench पे बैठे हैं without any reason. Till the time there is no valid reason of them not performing. So Thiago injured, अभी जितने midfielder options है हमारे पास, एटलेटिको के अगेंस्ट मुझे डर लग रहा था इस चीज के लिए, अगर एक मिडफील्डर फिर से कोई इंजर हो गया देन विल कहाँ कहाँ मिलनर को रखेंगे, देयर इज जस्ट वन मिलनर इन द टीम, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको इतना यूटिलाइज कर ले. तो इसीलिए आई फील अभी भी ना क्लॉप इज प्लेइंग ऑन दैट इमोशन. आई नो इमोशन कैन नॉट गो फॉर वेरी लॉन्ग, इतनी देर तक तुम मुझसे कैरी नहीं कर सकते हो, फटीग्ड हो जाता है बंदा कि सेम वे में तुम परफॉर्म करते रहो. बट that is what is surprising me too, that how is it working again, because at the start of the season it was not going to work for me. I had given up hopes completely. सारे hopes मेरे Chelsea से थे कि Chelsea is the one going to win this league this time, and उनको ही follow कर रहा है. अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं, because Liverpool से मुझे कोई उम्मीद नहीं था. So even I'm surprised कि how is it that he's playing on that, channelizing on that thing again. And also I'll tell you one more thing. In a press conference, Klopp said that, you know, it's like the squad that we have is 28, 29, 30 years old. Okay, 31. इतने age में है, तो he was asked that अभी aged हो गए हैं players. So Klopp said that they are not aged players, they are at the prime of their career right now, and this is when they should be performing and they should be playing best of football. So I think maybe he's telling that to the players as well, and that's what you can see, the confidence in them, you can see the belief in each other, you can see that. I think that is what is shifting that, and I'm liking it now. Let's see कब तक कंटिन्यू रहता है वो. बिल्कुल बिल्कुल और यही चाहिए. मतलब वी डोंट नो व्हाट गोज एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स, लेकिन एक स्क्वाड को फ्रेश रखना विद सेम टैक्टिक्स, क्योंकि सेम शेप आप खेल रहे हो ऑलमोस्ट 3 साल से, सेम स्क्वाड से 3-4 सीजन हो गए हैं, 17-18 से लगभग, व्हेन लिवरपूल रीच्ड दैट फाइनल अगेंस्ट रियल मैड्रिड से लेके अभी तक. आई थिंक 7-8 प्लेयर्स आर द सेम, स्पाइन मतलब वो सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है. तो बहुत ही इट इज अ टेस्टमेंट टू क्लॉप दैट हाउ ही इज स्टिल एबल टू मोटिवेट दीज प्लेयर्स विद सेम स्टाइल ऑफ प्ले, सेम पैटर्न्स ऑफ ट्रेनिंग, कैसे वो फ्रेश रख पा रहे चीज को. क्योंकि आपने बहुत सही चीज बोली कि मेंटल एग्जॉस्शन भी एक चीज होती है विच वी फैंस एंड मतलब मैं कहूंगा आम फुटबॉल देखने वाले लोग, हम वी डोंट टेक दीज थिंग्स इनटू अकाउंट. हमको तो लगता है ना यार क्या है यार, इतना फिट है, इतना टैलेंटेड है, क्यों नहीं कर रहा है गोल, या क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा. तो बहुत अच्छा बोला आपने. चलो अब इस गेम की स्पेसिफिकली बात करते हैं. तो ओल्ड ट्रैफर्ड में ये गेम है, और प्रियान मुझे लग रहा है कि ओले का नौकरी बचाओ आंदोलन चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, मतलब ये इस गेम वीक से. तो मुझे लग रहा है कि ही विल बी वेरी कंजर्वेटिव. ही विल, आई डोंट थिंक कि ज्यादा एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलने की कोशिश करेंगे वो. वी माइट सी अ बैक थ्री, जो हमने कभी कभी देखा है डेस्पिरेशन में ओले को ट्राई करते हुए. आई स्पेसिफिकली रिमेंबर दैट गेम अगेंस्ट चेल्सी एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जब दोनों मैनेजर्स ने बैक थ्री खिला दिया था और एकदम डेड मैच हुआ था वो, अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट मिनट रैशफोर्ड एफर्ट. तो डू यू थिंक कि with this Liverpool side, which is right now I think right up there, अभी तो मतलब बिल्कुल they are flying high और बहुत ही खतरनाक फुटबॉल खेल रहे हैं वो, तो ओले will shut up shop और थोड़ा pragmatic जाएगा, या फिर you are looking at more of the same? I'm happy you mentioned that Ole's job is on the line, Abhi, because last 3 seasons that go by, whenever his job has been on the line, he has delivered, and that is what has kept him in the job till now. So I'm very happy you said that, because like going from the past, he's going to win the game hopefully. But obviously, if you're being a little realistic, Liverpool are a fantastic team, and we are not doing well at all right now. So it's going to be very difficult to stop Liverpool. I don't think he would go back to a back three because I get Varane injured, so he'll have to play. I think आज Atlanta के game में he's rumored to start a back three with Luke Shaw, Maguire and Lindelof. So let's see how that goes. Maybe depending on that, he might go back to a back three अगर आज चल गया. But otherwise, I don't think back three is the best option. Simply because we've anyway not defended too well. We've conceded almost every game, and I don't remember correct. I think the game against Young Boys where Van Bissaka got sent off, we got in Varane for Donny, I think, and we played a back five. We played and we conceded 2 goals. A goal after that, 2 goals after that. So I don't think the team is used to playing a back three, and I don't think they are drilled enough to perform well in that formation. So back three, I think, is unlikely. I think it's going to be the same formation. Yeah. But don't you think अगर same
टैक्टिक्स के साथ गए, जो हमको दिख रहा है कि मिडफील्ड में कोई नहीं है। टॉकिंग अबाउट बैक थ्री, नितिका ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि वो डबल सिक्स खेलने वाला कोई प्लेयर है नहीं आपके पास अभी। तो वो क्योंकि बैक थ्री आपको खेलना है तो स्क्रीन चाहिए वो सेंटर बैक्स के आगे, तो डबल सिक्स वाला रोल कौन प्ले करे? फ्रेड यू कांट ट्रस्ट नाउ, मतलब मैकटॉम ने ठीक है थोड़ा सा Yeah. इनकंसिस्टेंट रहता है कभी कभी, तो वो भी एक बहुत खतरनाक कनेंड्रम है। लेकिन अभी ये तो वर्क कर नहीं रहा ना अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 3 मैचेस से, तो मतलब मुझे तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या करेगा I think Matic might start this game in that double pivot position because I mean I think he's probably been our best midfielder in the little time that he's played in this season, in that position at least, in the holding midfield position. And I think if he's not going to be able to play all games in the season, so I think this Liverpool game might be a good game for him to play because it's only he has that calming influence and he can play that role. No other midfielder in United can actually play that role, so I think he'll start. और नितिका फ्रॉम लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ऑब्वियसली लिवरपूल को तो अभी तो मतलब किसी भी टीम से डर नहीं लग रहा है फिलहाल, लेकिन डू यू थिंक कि लिवरपूल के माइंड में कुछ प्ले करेगा कि यार ओल्ड ट्रैफर्ड है, डार्बी है, मतलब सबसे फेमस फिक्सचर है ये इंग्लिश फुटबॉल का, और ओल्ड ट्रैफर्ड है, बजिंग रहेगा एटमॉस्फेयर बिल्कुल, तो डू यू थिंक कि कुछ एप्रीहेंशंस रहेंगे क्लॉप और लिवरपूल के माइंड में? नहीं तो फिर डोंट फिक्स इट अंटिल इट्स ब्रोकन, क्या लगता है? I think definitely we are going to Old Trafford and it's Manchester United versus Liverpool. There is a hype behind this match every time that this match is on. There is no way that you can think of anything else when there is Liverpool versus Manchester United, even if they are playing very, very bad. Even if they are at the bottom half of the table, people are going to watch a fixture that is Liverpool versus Manchester United. So I don't think that we are that strong mentally that we are going to Old Trafford and thinking कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, Old Trafford हो, कोई भी ground हो and we can like win the match, it's okay. We will play with that thing कि हर जगह जीत रहे हैं और बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, तो we can do that here also. नहीं, वो डर obviously होएगा and I'm happy कि वो डर हो हमारे में. ऐसा नहीं होना चाहिए कि we are just going ahead and doing whatever we can उस time पे. And and defensively काफी प्रॉब्लम्स हमारे हो रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट में भी. कीटा, आई वोंट से कीटा की वजह से, बट या ऑब्वियसली कीटा की वजह से थोड़े डिफेंसिवली एरर्स हुए हैं एंड वी आर कंसीडिंग गोल्स. इट्स नॉट लाइक अगर वर्जिल वैन डाइक है पीछे तो लाइक फॉरगेट अबाउट इट कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस हो गया है. नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हैं. अभी कल भी एलिसन बेकर ने हमको बहुत जगह से बचाया है. तो ओल्ड ट्रैफर्ड में रोनाल्डो है, ब्रूनो फर्नांडिस, एंड दे आर गोइंग टू वर्क इन दिस मैच. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट लाइक लिवरपूल के अगेंस्ट ये वाला टीम काम नहीं करेगा. दे आर गोइंग टू वर्क, दे आर गोइंग टू विन दिस मैच. एंड इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेडिक्शन, दे आर गोइंग टू विन दिस मैच. आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू बी अ different Manchester United that you will see against Liverpool than any other team, because they tend to deliver when it comes to big clubs. They will perform. They are definitely going to. रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं लगा रहे हो कहीं? नहीं, खुद पे it's not that. खुद पे प्रेशर कम कर रहे हो ऐसा बोल के? No, but I really feel that Manchester. You will see. I feel that Manchester United is going to be a different animal when they are going to play with Liverpool, and it's not going to be that same attitude at all. उस टाइम पे देखना पॉगबा भी पूरा दिखेगा कि एफर्ट मत हो. उस टाइम पे मे बी रोनाल्डो भी दिख जाए प्रेस करता. You never know, because this can work. बहुत हिस्टोरिकल फिक्सचर है. तो मुझे तो ये लगता है कि यूनाइटेड कैन विन इन दिस फिक्सचर एंड डेफिनेटली देयर इज प्रेशर. तो अगर ऐसा हो गया तो काफी मतलब मजा आएगा देखने में कि एक्चुअली में क्या होता है फील्ड पे. तो चलिए इस फिर प्रीव्यू को रैप करते हैं प्रेडिक्शंस के साथ. सो प्रयान, पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं. योर प्रेडिक्शंस फॉर द गेम. I am never going to predict that my team is going to lose. बिल्कुल यार, ये इस चीज से मैं भी एग्री करता हूं. हाँ, बिल्कुल यार. So I'll say 2-1 to United. 2-1 to United. You get approved by Baba sticker for that. मतलब मैं भी कभी प्रेडिक्ट नहीं करता कि चेल्सी हारेगी या मतलब कुछ खराब होगा. मैं कहूँ और ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा, जो मैं ब्रेंटफोर्ड के मैच के लिए किया भी था कि ड्रॉ होगा. नितिका, आपके प्रेडिक्शंस प्लीज. I think it's going to be a draw. It's going to be a 2-2 draw at Old Trafford. Yeah. Okay. तो आप जा रहे हैं 2-1 यूनाइटेड के साथ, नितिका जा रही है 2-2 ड्रॉ के साथ. देखिए, मैं भी चाहता हूं कि ड्रॉ हो जिससे थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप हो.
थोड़े टाइटल रेस में मतलब हमको एक ब्रीदिंग स्पेस सा मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक लिवरपूल हैव द एज, एंड मैं अगर अपने प्रेडिक्शंस की बात करूं तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 2-0 लिवरपूल विन। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है गाइज, यार थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप आए, मजा आया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और बात करेंगे इस मैच की बाद में जब हम रिव्यू करेंगे गेम वीक 9 का, और एल क्लासिको का भी डिस्कशन करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान तो है ही, और करवा चौथ भी है लेकिन उसका कोई रिव्यू प्रीव्यू नहीं होगा। ओके गाइस, प्लीज चेक आउट यूनाइटेड स्टार इंडी कॉप, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड वीडियो टाइटल एज वेल। स्टे सेफ, टेक केयर एंड पीस आउट। Bye, guys.